हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू दी कोडिंग अड्डा पॉडकास्ट। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट सीरीज का सबसे पहला एपिसोड। आज हमने दो स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है जिनका नाम है जैन एंड विवेक प्रजापति। ये दोनों हैं दी को फाउंडर्स ऑफ दी वाया क्रिएटिव टेक। ये एक ऐसा स्टार्टअप है जो फोकस करता है सर्विस प्रोवाइड करने में, जो कि बहुत इनोवेटिव हो, एफिशिएंट हो और इफेक्टिव हो। तो आज इस पॉडकास्ट पर हम बात करने वाले हैं उनकी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी के बारे में। मेक श्योर यू वॉच द फुल वीडियो। हेलो अक्सर, हेलो विवेक, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कैसे हो आप? Thank you. All Yeah, good. all good. How is your business going right now? Amazing. Okay, so every startup has a story. So what is your story for the migrated tech startup? So, firstly, our name. Our name itself means a lot. So, Via is VIA, right? And VIA is actually V slash A. So, I is so slash is replaced by I, right? So, V is for Vivek, I means slash, and A is for Ux. Okay. This thought was actually given by his fiance, our Bhaviji. So, that was like the most creative thing which we as a team did at the very early stage. And we have a motive, we have a specific thing that all our clients digital needs and technological needs should go via us, so via creative tech. That's how the name, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव नाम है, मतलब ऐसा सोचना है कि एंटरप्रेन्योर के दिमाग में ही आ सकता है। So आप currently what services are you providing to your clients right now? So Via Creative Tech is a parent company. In that we have four companies, four child companies. Right? Okay. That one is Viatech Media. Second is Via Digital Card. Third is Invisible Grills, and fourth we will be launching newly on 14 Jain mostly. That is Real Grow. Okay. So all the basic details. Yeah. So Vartic Media is a digital marketing firm wherein we do all sorts of things, right? From your basic social media marketing to PPC, personal branding, website development, application development, everything in technology and digital marketing. In Via Digital Card, we are actually disrupting the contact sharing industry. So the contact sharing industry has been the method of sharing contacts has been neglected since ages. Because if you see paper business cards or the business cards as such were into the picture since a 16th century. If you Google it, and till today it's the same. Either people are using business cards or just normal digital cards. Okay. But it's very much limited to that. But now the time has changed and we have introduced this smart card which works on NFC technology. NFC stands for near field communication. Okay. So it basically works on radio frequency. Okay, it's a superset and improvised. It's an improvised version, not a superset. It's an improvised version of RFID, which is radio frequency identification. Okay. So that's what it is. And the third business is invisible grills, which is into home decor. Okay. So nowadays, builders don't like their elevation to be disturbed. Now, if you see metal grills, they disturb the elevation because कोई कैसा लगाता है, कोई कुछ और लगाता है, and it feels like a jail. And builders are nowadays giving you the half grills, right? Just to make it look like a good building, have a good elevation. Okay. And we help, protect the elevation and also provide safety of a grill. That's what invisible grill is. And number fourth is, which we are launching on 14th, most probably it's realgrow.in. The tagline is where real estate grows. So more on that when it gets launched. So you talked about the NFC card. आपका business है NFC card पे. So आप एक simple words में would you tell the audience about the NFC card? मतलब in a simple language. You told about RFID and all, but अगर किसी को नहीं पता तो. Sure. So let's say you go into any 4-star or 5-star hotel, right? You check in. So for accessing your room, they give you a smart card, right? Wherein there's your room number written on it, and when you tap it on that particular lock system, the lock gets unlocked. Okay. So over there, what happens is that particular card, okay, it has a chip inside it. Okay. Which has certain things stored, right? And the lock reads it, and when the frequency matches as it has been set in the database from the reception board,
and when the conditions match. So we have basically in programming we have studied if else condition, right? So when the condition matches, the locks get unlocked. So basically, it's the radio frequency the communication between the card and the lock happens in radio frequencies, Okay. right? And that is basically the RFID thing. Now, an improvised version which is made for smartphones or smartwatches. This Series 7 Apple watches, they have NFC in them. Okay. So it's for smart devices wherein Okay. the proximity range is very small. Hmm. It's hardly 10 centimeters. Okay. Right? That's what it is, NFC. And using that, we are able to share contacts. Okay. So if someone taps our card on an NFC enabled device, a digital card pops up directly. Okay. So you have an NFC card, a physical card, and a digital card both integrated with each other. Okay. Okay. And this is actually changing how people share their contacts. Hmm. Because paper business cards, as we know, they are somewhat so both the products, NFC card and paper business card, they complement each other. Okay. No one is the best, okay, and no one is the worst. They Okay. both have the different use cases. Okay. That's how it is. Okay. Okay. मतलब कोई भी हम when we start do a startup, my question is that कोई भी startup करते हैं या business start करते हैं, there are many difficulties. या तो हो सकता है कि you have a family background of business, so you do have a certain idea कि हाँ चलिए ये issues आते हैं तो we can resolve it like this. So आपके जिसमें startup में जो issues आए थे, how did you tackle with it? इश्यूज तो बहुत सारे हैं और रोज आते हैं और रोज Okay. अलग अलग आते हैं एज वी आर नॉट एक्सपीरियंस इन इट कि हमें कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है, हमें कुछ नहीं कर रहा है, हम डेली कुछ ना कुछ कर रहे हैं, शायद वो पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, बट पॉजिटिवली हम लोग ज़्यादा सोचते हैं कि ये शायद हो ही जाएगा, अगर नहीं हुआ तो देयर इज अ प्लान बी, वो प्लान बी क्या होगा कैसे होगा फिर हम लोग उस हिसाब से भी चलते हैं, बट मोस्टली यही होता है कि फाइनेंस का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है कि सैलरीज कैसे दे अगर ये टाइम पे नहीं हो रहा है, ये टाइम पे, और मेन सेकंड थिंग इज कस्टमर्स को सर्विस, अगर आपने सर्विसेज अच्छे दे दिए, मे बी शायद स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम हो, बट अगर सर्विसेज आपने अच्छे देने स्टार्ट कर दिए ऑटोमेटिकली विल डू, दिस इज द बेस्ट वे टू गेट अ कस्टमर इज सर्विस. Since you have आपका एक कंपनी ग्रो हो रहा है अभी, so what could you tell people some resources, कुछ resources आपने देखे होंगे या कोई बुक्स पढ़ी होगी to grow in that company? So a lot of things actually which I would like to share. Firstly, reading books. Yeah, that's a really good habit because firstly it improves your vocabulary. Okay. As a businessman, as a businesswoman, both the ways, you should be a good speaker. People must understand what you're saying and they should get impressed with your vocabulary and your speaking skills. Books help in a lot of different ways. If you would have seen me in my 10th class, I was a very, very bad speaker. But now, if you could just, I've improvised a bit, right? After reading books, the vocabulary has dramatically increased. So I would recommend this book right here. So usually we have these books in our office. This particular book, The Psychology of Money, is one which teaches you about finance. And number 2, right over here, I have 0 to 1. Yep, 0 to 1. This will teach you how to build a good product or how to build a good service as a company. So these 2 books, The Psychology of Money and 0 to 1, I would recommend. Apart from that, The $100 Startup, Rich Dad Poor Dad for a Personal Finance, all those books. So if you search, you'll find those things. And if you want to grow as a person, then how to influence friends and people. This will make you really attractive. Okay. I mean, in terms of and as an attractive person who has a good personality. That's what it is. So that's for the books. Apart from that, please focus on skills. So to the audience, I will say, please focus on skills. Skills are the only things which matter. Whether it be technical skills, whether it be speaking skills, whether it be finance skills, management skills. Skills are the only thing which will help you grow. Even take an interview with an employee, straight away हम लोग सिर्फ स्किल्स देखते हैं, हाँ, not even. उसका स्किल्स कितना है क्या है और उसके जो भी उसके एग्जांपल्स होंगे जो भी वो बनाया होगा वो देखो, बाकी कुछ I think अभी के टाइम में डिग्री इज जस्ट piece of paper आपको बताने कि हाँ मेरे पास डिग्री है. ये यहाँ पे होता है, अभी तक गवर्नमेंट अपग्रेड कर रही है धीरे धीरे Yeah. मतलब सो दैट कि इंडियंस को थोड़ा वो पढ़ाई मैटर करे. New education policy. लाइक हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं था, लाइक फाइनेंस क्या होता था किसी को पता ही नहीं. एक्चुअली वो सब होनी चाहिए और शायद गवर्नमेंट ट्राई कर रही है इम्प्लीमेंट करने के लिए. और 10 इयर्स का जो गैप होता है ना कि एवरी 10 इयर्स में सब चेंज होने चाहिए सब्जेक्ट्स, वो शायद थोड़ा कम होना चाहिए बिकॉज 10 इयर्स में क्या एक साल में बहुत नई नई चीजें आती है, तो एवरी बट 3 इयर्स में एटलीस्ट पोर्शन सब चेंज होनी चाहिए, इम्प्रोवाइज होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए. For instance, engineering, you're still learning about microcontroller 8086 and all that stuff. That's not useful. That the production band ho chuka hai. But yeah, basics are important because you get to learn that.
but there should be advancements as well. अगर अपने बच्चे आज वहाँ जाके कहीं पे compete कर रहे हैं, you know, see a lot of people argue that okay, आप बोल रहे हो education system खराब है, but top CEOs are Indian. They're not Indian firstly. They are native. They are American, Indian Americans, right? American Indians, whatever it is, and they have studied over there. They've done their masters, so they get to know that. And the way of education, obviously, we are really hopeful that when the new education policy comes in 2023, it creates a better future for our coming generations. Yeah, that's what it is. So was this your first startup? आपने पहले business किया या this is your first venture as a startup? For mine, this is the first. Okay. I've done one, like technically legally one. Apart from that, many executions and ideas failed as well. Okay. So Vivek, were you earlier in business or were you having a job? I was an employee. I was an employee in Wipro for the 5 years as an administrative. Okay. So from there, I got to learn about the organizations, how organization works, hierarchy. Okay. There is always an hierarchy. तो फॉलो होना चाहिए कंपनी में. कंपनी स्टार्टअप्स बहुत खुलती है, बट टीम में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन और कुछ भी फॉलो नहीं होता है ना, करेक्ट, तो बहुत मैसअप हो जाता है. एग्जांपल लाइक अभी हम अगर हम दोनों सिर्फ टेक्निकल होते, टेक्निकल बैकग्राउंड से ही होते और कुछ पता नहीं होता है कि कंपनी चलानी कैसी, से हम बना तो लेते लेकिन बेचते क्या, कैसे बेचते, कंपनी कैसे फॉर्म करते, किसको क्या करना है, कैसे करना है, हायरार्की होना ही चाहिए कंपनी में. सो विप्रो हेल्प मी इन दैट. मतलब कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस हम मांगते हैं, कहीं भी जाते हैं एक्सपीरियंस चाहिए, तो ये एक्सपीरियंस काम आता है हर एक जगह. करेक्ट. इट्स नॉट ऑलवेज अ टेक्निकल चीज, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, एक्सपेक्ट्स होते हैं कि ये सब होनी चाहिए. करेक्ट. एक टीम में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो विप्रो से मुझे वो मिला. सो मतलब आप विप्रो में पहले यू आर एन एम्प्लॉय, फ्रॉम डूइंग अ जॉब एट विप्रो टू डूइंग योर ओन स्टार्टअप और बिजनेस, आपको क्या कुछ क्रिटिसिज्म फेस हुआ कि मतलब people may be like तेरे को 9 to 7 एक पर्टिकुलर जॉब है, तेरे को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है एंड यू डू अ स्टार्टअप, पैसा का कुछ ठिकाना होता नहीं है, आपको 24 घंटे मतलब जहाँ पे आप 12 घंटे काम कर रहे हो, यू हैव टू वर्क फॉर 24 आवर्स. सो वैसा कुछ आपको क्रिटिसिज्म फेस हुआ? नहीं, मुझे कभी क्रिटिसिज्म फेस नहीं हुआ. मुझे उल्टा सपोर्ट मिला लोगों से. दे वर हैप्पी. उनको पता है कि ये बंदा कुछ कर सकता है. मेरे जितने भी दोस्त हैं, थैंक्स टू देम, फैमिली, सब लोग ने मुझे हेल्प किया. किसी ने ऐसा नहीं बोला क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या जरूरत है, बट उनको पता है कि ये कर सकता है. तो मुझे हमेशा सपोर्ट मिला है, नो डाउट. मुझे किसी से क्रिटिसिज्म नहीं मिला, इवन फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, चाहे वो मेरा दुश्मन भी हो, लेकिन किसी ने मुझे कभी बोला नहीं कि तू गलत कर रहा है. उल्टा मतलब क्रिटिसाइज तो दूर की बात है, लोगों ने सिर्फ सपोर्ट ही किया. एंड स्पेशल थैंक्स टू माय फ्रेंड्स सबरम, अगर उसका नाम आप यूज कर सको तो पॉडकास्ट में. What about you? क्योंकि आप हो इंजीनियरिंग में, you know a typical background कि कोई अगर आपसे ऊंचा जा रहा है, आपके पैर खींच के आपको गिरा देगा. So अभी आप do you face a criticism or no? Are your friends supporting you? Friends are supporting me. Okay. But they are supporting me in a lot of ways. Like okay, so I had two of my friends, Hate and Harsh. These guys have also helped me in like security and all the stuff, basic help. Wherein so average VAPT consultancy, it costs roughly around $2,000-$3,000. So they did help us with that. And friends in general help you with a lot of things. They teach you about, okay, this is the things which are going in industry. Because we are too much busy with our business, our work, that sometimes a lot of things छूट जाती है. So at that point of time they have helped me. So friends have helped, obviously. Criticism never, because it was predefined right from my childhood. I was going to do not right from my childhood, but after 10 it was pretty much there that okay, startup ही करना है. So no criticism as such. Family, especially my dad and mom, hats off to them. They gave me a free hand कि ये आज से 10 साल तक तुझे घर पे एक पैसा नहीं देना, कर जो करना है. And I was really grateful to have that kind of family which has comparatively good financial background that can support me. So I didn't had a thing that okay, मुझे मैं अगर जॉब करता नहीं हूँ इंजीनियरिंग के बाद तो मुझे यार घर पे पैसे कैसे आएंगे. That was taken care by my mom and dad, who have supported me a lot in this journey. So hats off to them. उनके बिना कुछ नहीं. I also think कि एक फैमिली का सपोर्ट जरूरी है. अगर आपकी फैमिली नहीं सपोर्ट करती है, वो that is a different thing कि अगर आप कोई चीज कर रहे हो and you are going at a good pace and you are growing, तो that is like an accomplishment to you when you are doing that alone. But अगर फैमिली के साथ कर रहे हो तो that is like आपके फैमिली के साथ में आप you can celebrate that thing. Definitely. अब जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए, सिर्फ मेंटली मिला ना, बहुत that is
दैट इज बेस्ट, बहुत। मतलब उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बिकॉज हम्म। आप जब घर जाओ तो आपको ये नहीं भाई पैसा है क्या है कैसा है, हाँ द थिंग इज योर सपोर्ट मिले, हाँ तू कर रहा है ठीक है हम देखते हैं, तू भी देख। क्योंकि अगर वो टाइम 1 साल सिर्फ 1 ईयर 1 साल अगर मिल जाता है ना, आई थिंक फैमिली है अपने स्पेसिफिकली मॉम डैड के लिए वही मैटर करते हैं कि आप खुश रहो, कुछ भी करो, इंजीनियरिंग करो, जॉब करो, अभी You बहुत have to बार be happy. बहुत बार क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं फैमिली सपोर्ट नहीं करे बिकॉज एक यू आर नॉट एबल टू कन्विंस देम अबाउट समथिंग के यू आर डूइंग अ राइट थिंग, and number two they are and obviously they are always concerned about you. Yeah. So you need to convince them, or if they are seeing that you are going the wrong direction then they want to stop. Right, so that's the only concern. You need to convince them and you need to prove it to them. तुम इतना टाइम कुछ कर रहे हो and you are not building something, चलो तुमने 6 महीने ले लिए, you have not built a product or a service, you have not done one sale, तो parents are right of not supporting you because they want to drag you down and भाई तू चल मैं तो तुझको सेटअप करके दे रहा हूँ, वो कर ले या तो पढ़ाई कर ले अच्छे से. Correct. If you're not serious about it then your parents are stopping it, it's perfectly right. So I think parents कभी गलत नहीं सोचते किसी. एंड वन मोर थिंग, क्रिटिसिज्म का आपने बात किया था ना, तो वो ऐसा नहीं है कि कोई करता नहीं, करता होगा बट हमें नहीं कोई मिला, बिकॉज मे बी शायद हमारे नेचर हमारे बैकग्राउंड अच्छे, कि मतलब हमने कुछ अच्छे ही किए तभी हमको लोग आके हेल्प कर रहे हैं, सो दैट अभी किसी को हेल्प चाहिए होता है तो हम लोग भी रेडी होते हैं. Yeah. कि भाई कुछ करना है चल हम लोग हैं, हेल्प कर सकते हैं जितना हो सके हमारे पास से हेल्प, मे बी दैट विल बी फाइनेंशियली भी हो सकता है और इमोशनली या जो भी है जिसको कुछ चाहिए, रिसोर्सेज वगैरह गाइडेंस हम सब देते हैं, क्योंकि हमको भी किसी ने दिया वो टाइम पे हेल्प किया, तो वी आर वेरी ग्रेटफुल. तो हमको भी पता है कि जितना हो सके हम भी दे सकते हैं. Working back to the society. Correct. At a whatever scale it might be, and it might Yeah. the scale will increase as we both grow, right? That's how the scale of helping will increase, but the helping thing will be there forever. समटाइम्स दैट थैंकफुल इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ, मतलब वो बोलते हैं ना गुडविल होना चाहिए लाइफ में कभी. वो एक आप अगर एक स्टेप वो जो अधूरा स्टेप है वो इंसान या जो भी है वो पूरा कर रहा है, एक स्टेप सक्सेस क्या कर रहा है, आप एक स्टेप मिल गया तो यू कैन गेट सक्सेस. करेक्ट. Now coming back to the topic, now my next question was कि when you build a startup, right? There are two things कि मैं अपनी मन से कर रहा हूँ, दुनिया के हार में मेरे को उनका सुनना नहीं है, या एक है कि जिनका स्टार्टअप है they are doing some business not related to your domain, any other domain. So according to you, should you do things that you want or should you listen to others for doing the business? सी हम लोग ने स्टार्ट तो हम लोग ने ऐसे ही किया था कि हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बट हमने सबकी सुनी भी, बिकॉज रिव्यूज मैटर्स. क्योंकि अगर तुम हमको लगता है कि हम कर रहे हैं वो सही है, बट जब तक कस्टमर नहीं बोलता ना कि तुम सही हो, बिकॉज हमको पता है हमको ये चाहिए बट कस्टमर को क्या चाहिए हमें नहीं पता, तो रिव्यूज इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट थिंग. तो इसलिए हमने लोगों की सुनी भी है और इम्प्लीमेंट भी की है, ऐसा नहीं कि हमने जो किया वही सही है. तो दिस इज माय ओपिनियन. Correct. Exactly what you said. And so apart from customers also आपके आसपास ऐसे बहुत लोग हैं जो आपसे बहुत एक्सपीरियंस, whether it's be it job, be it business, be it anything, they have experience, they've seen the world which you haven't. Especially me, अभी मैं अभी भी बच्चा ही को कंसिडर करेंगे, 21 ही है, तो मेरे में बहुत कमी है एक्सपीरियंस की. So somewhere नहीं, everywhere Rahul bhai came in as a Vivek bhai experience है इतना, so a lot of conversations, maybe negotiations, a lot of it. So experience comes into play. Right. So you need to hear from people who are around you, who have maybe you might not have achieved something, but you get to know what not to do. वो बोलते हैं ना, you get to learn 100 steps of how to not get into something so that you avoid it. That's how I believe. So listen, always keep your ears open and mouth shut. Open your mouth sometimes. I also think कि मतलब when you are small, not at any मतलब कोई भी age हो, but you should for doing something big in life, you should always talk to people that are bigger than you or that are elder than you. I have had listened in some kind of podcast. Definitely. So my next question is to Vivek bhai कि आप एक startup कर रहे हो and you are growing, पैसा तो आ ही रहा है. एक पॉइंट आता है कि मतलब एक that is the human tendency कि पैसा आता है ना तो ईगो भी आने लगता है कि भाई मेरे को आता है, मेरे सिवाय किसी को नहीं आता. तो हाउ अगर आपको आया भी होता है, हाउ डिड यू टैकल इट? अभी तक तो हमने इतना अचीव नहीं किया है, True, 100% मे बी 1% भी गया, 0.1% है, तो अभी तक ईगो आने की बात ही नहीं हुई. करेक्ट. और 1 साल में ईगो आ गया तो मतलब वो इंसान कभी ग्रो ही नहीं करेगा. या करेक्ट. क्योंकि उसको इतने चीज में इतना घमंड आ गया तो क्या ही ग्रो करेगा.
सो ईगो तो अब तक स्टार्ट नहीं हुआ और आया ही नहीं अभी तक तो फिलहाल, So और it's सोचा भी नहीं है। it's a 10-meter sprint which you have done in a 1 kilometer marathon. So ego nahi ho. It's But I think that is also commendable. You have done 10-meter sprint because you are in college right now, and college में I think public ऐसा रहता है कि यार हमको engineering करना है, खत्म करना है, and किसी के धंधे पे लगना है. But thinking about it in a different way कि rather than चलो पढ़ाई छोड़ो, मेरे को और कुछ करना है, and I want to do something different in life. So that is very commendable. अभी एक ऐसा टाइम आया है इंडिया में कि स्टार्टअप्स का राइज हुआ है. करेक्ट. मार्क्स ये Amazon CEO जेफ बेजोस ने भी कहा था कि the 21st century is the Indian century. And talking on that, एक recently एक show आया था SharkTank India. So what are your thoughts on that? So it's a really good show. I mean, see, I won't say कि एकदम ही like to the pitch perfect show था, but it was a really good show. उसने so this show showed मेन थिंग इज कि उसने awareness. इंडिया में अवेयरनेस दिया. मतलब शायद आज हम हमारे पेरेंट्स को बोलते हैं कि हमको ये करना, हाथ छोड़ो, ये ऐसी चीज होती है, पता होनी चाहिए. सो अवेयरनेस जो इम्पोर्टेंट था वो मिला वहां से. उसमें ऐसा भी हो कि मतलब ऐसी अतरंगी चीजों से लोगों ने बिजनेस किया, करोड़ों का बिजनेस किया. मतलब वो देखना चाहते हैं कि इंडिया में ऐसे लोग भी परेशान बिजनेस entrepreneurs got celebrated. आज Ashwin Grover is getting over 800,000 followers. I don't remember the number. Aman Gupta has crossed 1 million. So this is what we needed, right? These are so there are a lot of heroes apart Bollywood. I don't consider them heroes, but apart from that, your army, your your civil services, your everyone, and now the entrepreneurs got added up because they are the ones who support the Indian GDP. They create jobs. They don't seek jobs, right? Yeah. They boost your GDP. They give good services. They make your lives easier. So you should celebrate them, right? Yeah. And that's what this show did. So hats off to the show. I have been watching it since the US season and Australian season came in. So I was really a dear fan of this particular show, a really big fan. In the US Shark Tank, you have Kevin O'Leary and Shark Damon and Mark Cuban. So these guys have done a really great job. And now in this Shark Tank India, you have all those great people whose products and services we are using on a daily basis. Then you get to know that Shark Tank season 2 is coming in, where Ashwin Grover is out and Amit Jain is in from Car Depo. It's really great. That was also very insightful. मतलब कुछ अलग देखने मिला rather from all the daily soaps. Shark Tank बहुत important. Like I am from North Indian. तो हमारे में ऐसा है भाई, कुछ भी हो गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे वो रेलवे हो या आईपीएस बनो या कुछ भी बनो, गवर्नमेंट जॉब मतलब भगवान है. बिजनेस क्या मतलब भाई कुछ गलत कर रहा है. इन नॉर्थ इंडियन होता ही है. बट वो शार्क टैंक से शायद मैं बिजनेस करता हूं, मेरे डैड को आज भी पता नहीं करता है क्या डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है. सो लाइक बट शार्क टैंक से पता चलता है कि बस बिजनेस होता है, पैसे आते हैं, मेन घर पे पैसे पहुंचने चाहिए बस. और हैप्पी. दैट्स अ फैमिली थिंग. या फाइनेंशियल हम कर क्यों रहे हैं. ठीक है, देयर इज अ कॉज कि चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करना है या कुछ नया करना है, नया प्रोडक्ट लेके आना है. बट आफ्टर ऑल इट्स ऑल बीन डन टू गेट मनी. बिजनेस का मतलब क्या होता है? Money. You're solving a cause and you're making money out of it. If you're not making money out of it, then it's a non-profit organization. Better declare it as an NGO, not a business. Yeah. That's what it is. सबके मन में बचपन में यही होता है. 9th 10th में आने के बाद सबको ये होता है कि मैं भी एक जस्ट मेंबर हूँ, मेरे पास सब ये वो बट उधर तक पहुंचने के लिए क्या करना है किसी को पता नहीं. सबको पता है, लेकिन वो कौन कितना कर सकता है या घुसना चाहता है और 100% देगा वो होगा ही होगा. वो कितना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहता है. एक बहुत सा क्रिएटिव देखा था मैंने किसी पेज पे. आई गेस इट वाज सक्सेस टिप्स. मेरे को याद नहीं आ रहा पेज. वॉनरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर. वॉनरप्रेन्योर सोच रहा है और सोच ही रहा है नीचे. तो देयर वाज अ फर्स्ट हाफ वेयर इन एक वॉनरप्रेन्योर है, ही इज थिंकिंग, एंड 1 year बाद ही इज स्टिल थिंकिंग. Entrepreneur is thinking, 1 year he is not there, he started working. That's the difference. That's that one first step, which is you consider it's a really big decision of your life. You are consulting with people, you're afraid as well, but you have to take it. One step you take, and then you keep on taking small steps. It's very easy. मतलब easy भी नहीं है और hard भी नहीं है, but easy अगर तुमने decide कर दिया और करना है ना तो तुम करके दिखाओ. In any cost. करना है तो होगा ही होगा और सक्सेस होना ही होना है. बट अगर उसने बीच में छोड़ दिया
कहीं पे, बिकॉज बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, अगर डाउन्स में भी इसने एक दो बार छोड़ दिया ना, फिर तो कभी ऊपर नहीं जाएगा। सेम लाइक शेयर मार्केट, जो I नीचे think गया छोड़ा हाँ फिर खत्म, पर वही ऊपर आता है तो फिर बाद में अफसोस होता है, अरे यार मैं भी ये कर रहा था लेकिन उसने क्या ऊपर चला गया। आई थिंक लाइफ में भी वैसा होता है कि यू आर टेस्टेड व्हेन यू आर एट योर लोएस्ट। हाँ। जितना ऊपर आओगे तब मतलब जितना उसमें बाउंस बैक कर सकते हो उतना ही you can grow that If you fast. see stories of all successful entrepreneurs, they have always felt that one rock bottom point. उसके बाद there is this exponential growth which happens. Because Yeah. no point, see, life is an exam and you're getting tested. Yeah. It's been said everywhere. Yeah. But between that life and death part, all you need to do is you're being tested. You have been put into a lot of situations. Yeah. Right? You need to get out of it without actually making losses for anyone else, without getting someone else into wrong track for your own benefit. That's what it is. You are being tested, and there's this one rock bottom which will come once. Which will come, and after this, when you hit this and you bounce back, it's going to be huge. Jack Ma got rejected 33 times. He was rejected as a KFC waiter. 33 jobs rejection. I mean, if I would have been him, I would have been shattered. But he grew, right? He got investment. हैरी पॉटर की राइटर भी 12 बार Yes. रिजेक्ट हुई थी। My next question is to both of you कि कोई भी स्टार्टअप होता है, इनिशियल फेज में it requires some funding. So how did you get your funding? From parents or you had some amount of savings? पेरेंट्स से कुछ कुछ नहीं लिया। किया हमने। See, मैं as I said I was in growth, तो मेरे पास थोड़े फंड्स थे। Okay. इसने भी कुछ स्टार्टअप ट्राई किए थे, ये भी Freelancing, internship. फ्रीलांस कर रहा था, तो ही हैड हिज मनी। हमने एक कंट्रीब्यूशन करके हमने कंपनी स्टार्ट की, बिकॉज आईटी है, इसमें कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने स्टार्टिंग में लिया नहीं था कुछ, हम इसके घर पे से काम करते, हमारे घर से काम करते थे स्टार्टिंग में, लाइक 3 to 4 months में ऐसे ही किया। सो तो वहाँ पे कुछ ज़रूरत नहीं थी, जहाँ ये टाइम पे फैमिली की ज़रूरत थी वो हमें मिली। हाँ। जो हमें चाहिए था वो हमारे फैमिली से मिला, टाइम कि तुम करो हम लोग देखते हैं, सब कुछ किया उन्होंने, वो जो था हमको मिला। अब सिर्फ एक इनकॉर्पोरेट करने के लिए हमको सिर्फ पैसे चाहिए थे, वो मिल गए। ऑटोमेटिकली जो भी हमारे सर्विसेज है हमने लोगों को पिच किए, दिखाए, एज आई सेड कि हमारे फ्रेंड्स से हेल्प किए। तो मेन कनेक्शंस होने ही चाहिए लाइफ में। अगर तुम अच्छा करो सामने वालों को कुछ तो गिव बैक करेगा ही करेगा। Correct. सो वो करते रहो, ऑटोमेटिकली तुम ग्रो होगे, तुमको कनेक्शंस मिलेंगे, और सबको पता है माउथ पब्लिसिटी इज द बेस्ट पब्लिसिटी। तो जितने भी हमें स्टार्टिंग में जितने भी क्लाइंट्स मिले वो सब वाया कनेक्शंस मिले। तो आज ऐसे ही हो रहा है। So talking about investments and funding, what are both of your thoughts on crypto? ओके, क्रिप्टो में सी आई हैव नो नॉलेज। Okay. थोड़ा मैं 30 years Out of the तो box. थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स में समझता नहीं, बट ही इज इनटू इट, तो ये Yeah, so not a very lot of people know, but I am a blockchain developer. Not a full-fledged blockchain developer, but yeah, I've developed my own tokens. I've worked around creating my own blockchain, some sort of things at a basic level when I was learning blockchain. So blockchain and crypto, people usually crypto बोला ना, blockchain बोला ना, लोग crypto समझते हैं या bitcoin समझते हैं, but that's not what blockchain is. Okay. Cryptocurrency is just a byproduct of an entire blockchain transaction. So in a nutshell, I'll explain what blockchain is and how it works. So blockchain, as the name suggests, it's a chain of blocks. Okay. So let's say there's a blockchain network where on the network there are 10 PCs connected. Okay. So what will happen is if you send a data from PC A to PC J, so 10 A to J. So what will happen is this particular file will get divided into blocks and will get distributed throughout the network. Okay. Now since all of them are connected, but this blockchain works on private key and public key. Okay. Public key सबके पास है, private key जिसके लिए बना है, the J system रिसीवर के पास ही उसी के पास ही है। So क्या होता है ना, यहाँ से यहाँ जब जाता है ना फाइल, इसमें पहले पूरे नेटवर्क पे स्प्रेड होता है इन ब्लॉक्स, एंड बहुत सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन होते हैं, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसमें सारे सिस्टम्स का ना कंप्यूटिंग पावर यूज होता है। अब if I am connected to the system as a miner and I am dedicating my computers, my systems, my GPUs, memory, processing power, तो मैं फ्री में क्यों करूँ, मेरे को तो पैसा नहीं चाहिए मुझे। That's where cryptocurrency comes into play. It's being given as a reward to that particular miner who is helping you verify the blockchain transaction. Okay. Crypto उतना सा part है बस। Cryptocurrencies were actually not made for trade. This
buy and sell, buy and sell. हाँ। It was made as a transaction medium. आप कैश का buy and sell करते रहते हो, नहीं यूपीआई का मनी buy and sell करते हो, कसं करते हो, करेंसी exchange करते हो, yeah but daily basis पे do you trade money? no So that was that's the particular thought of a cryptocurrency, right? okay So it was meant for a good transfer. So I'm sitting in Africa and I'm doing transaction in US. Then shouldn't, तो अगर मैं fiat currency में करूँगा तो मुझे बहुत charges लगेंगे. Cryptocurrency helped in that, no charges, only gas fees. So gas, अगर किसी को भी crypto में invest करना है तो I'll give you 3 steps. Firstly, actually verify the contract address of that particular currency. क्या वो इथर स्कैन पर इथेरियम में तो वहाँ पे है या नहीं है, उसके ब्लॉकचेन का क्या स्टेटस है. Second, read the white paper. So basically white paper होता है documentation. okay तो cryptocurrency का यूज क्या है, क्यों बनी है वो, क्या फ्यूचर स्कोप क्या है, वो पढ़ो. एंड फिर हैव अ look at the market cap and basically people who are behind that cryptocurrency. okay So it does make sense to study things. But I'll make, so जैसे इंटरनेट को criticism मिला था in the early 90s, वैसे criticism अभी blockchain को मिल रहा है. But once market develops, market matures, this will be adapted. As in the government itself is introducing digital rupee. It's based on blockchain. It's a private blockchain rather, where you can see all the transactions. Yeah, it will grow. okay so according to you what are some factors अगर for example let's say a viewer wants to develop a business तो ऐसे any 5 or any factors that you would like वो दिमाग में रखने चाहिए to start a business The factors क्या, but basic general points that one should keep as in he mind. said in the very beginning, service is what Yeah. is important. Secondly, you're presentable. You should be presentable, like the presentation skills. You should be able to convince them. अगर तुम बेच ही नहीं पा रहे हो तो धंधा नहीं कर सकते. We faced a lot of problems earlier, but then धीरे-धीरे टाइम ने सिखा दिया हमें वो चीज. फिर उसके अलावा obviously your connections, as you said. कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तुम किसको कैसे क्या डिलीवर कर रहे हो. सर्विसेज तो मैं बोल रहा हूँ, अगर तुमको जीतना है तो मेन सर्विसेज, चाहे वो कुछ भी हो, इवन इफ इट इज अ प्रोडक्ट, इवन इट इज अ सर्विसेज बेस्ड कंपनी और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, अगर तुम सर्विस अच्छा दे रहे हो, क्योंकि प्रोडक्ट बेचने के बाद भी सर्विस देना है. ऐसा नहीं प्रोडक्ट बेच दिया तो भाई हो गया मेरा काम खत्म, उसके बाद भी सर्विस. अगर वो सर्विसेज पे आप हाँ गए ना तो आपके जितने भी अलग अलग सर्विसेज है वो ऑटोमेटिकली आपके कट हो जाएंगे. मेंटेनेंस से भी आपको ध्यान देना पड़ता है. So, okay हर बिजनेस में यही होता है, धीरे 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 कंपाउंडिंग. तो जैसे आपको पता ही होगा कंपाउंडिंग ऐसा है, 1+2+2 जैसे जैसे बढ़ते जाता है नंबर्स एक्स होते जाते हैं. so the last question of the podcast is that you आपके भी बिजनेस में कभी ऐसा डाउनफॉल आया होगा, नो डाउट. सो ऐसा कौन सा मोटिवेटिंग फैक्टर था आप लोगों के लिए कि नहीं चलो अभी वापस बाउंस बैक करना है हमको बिजनेस में? मतलब कोई रोज आता है वो. रोज आता है. हम लाइक अभी 4-5 दिन पहले इसके एग्जाम में ये पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाता था बिकॉज कुछ ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऊपर नीचे हो रहे थे. सो ही वाज लाइक कि अरे ऐसा कैसा हो गया, तो ही वाज नॉट एबल टू कंसंट्रेट इन एग्जाम. मुझे फोन किया, राहुल भाई हम लोग नहीं कर पा रहे, लेट्स हैव अ मीटिंग फॉर एन हाफ एन आवर. वो हाफ एन आवर हमारा कभी होता ही नहीं. तो हमारा हाफ एन आवर से 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे भी हो जाते. कहाँ बैठे, क्या पानी भी नहीं, सब कुछ ध्यान नहीं रहता. कैसे करना है, क्या करना है, ये मुझे कुछ बोलता है, पॉइंट्स में इसे बोलता हूँ. डिस्कशन ब्रेनस्टॉर्मिंग. फर्स्ट ये होता है कि पहले तो लोगों की सुनो, जैसे स्टार्टिंग में हमने कहा. फिर अपना जो ओपिनियन है वो दो, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ जरूरी नहीं हमारे ओपिनियन सही हो या उसने जो बोला वो सही हो, या मेरे जो बोलने पे उसको भी सही लगे. जब मैं भी बोलता हूँ तो वो सुनता है, वो बोलता है मैं भी सुनता हूँ. फिर हम एक कंक्लूजन पे आते हैं और करते हैं. बट करते हैं अगर हमने ठाना है कि करना है तो फिर करना है. ऐसा नहीं चलो आज बोल दिया कल नहीं करना है. अगर नहीं भी कल नहीं किया तो एटलीस्ट दोपहर तक तो करना है, सुबह नहीं हुआ तो बट वो करना है. अगर नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियस है वो तुम्हारा 3 घंटा भी वेस्ट हुआ, उसका स्टडी भी वेस्ट हो रहा है, उसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है. सो इट्स बेटर कि वो 3 घंटा दिया तो 3 घंटा 30 घंटे में तुम्हारे कुछ रिटर्न दे. So how thank you for being my first guest for the series. Thank you for having us. आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? Would like to really know. good. हमारा तो पहला हमारा podcast भी फर्स्ट पॉडकास्ट है. Okay. but it was really good. या हमें भी अच्छा लगा कि हमारे एक्सपीरियंसेस और हमारे जो हमने जो किए हैं हमारे हाँ. कैसे फॉर्म किए, क्योंकि लोगों को हमारे विद इन दी कम्युनिटी लोग को ही पता है कि हमने कैसे किया. लाइक लिटिल फ्रेंड्स वगैरह वो बाकी किसी को पता है. मे बी फ्रॉम दिस पीपल विल नो अस, लोगों को पता होगा कैसे चल रहा है क्या है. एंड अदर साइड की एक्चुअल इनटू द स्टार्टअप, जो छोटे लेवल पे स्टार्टअप से कोई कवर नहीं करता है. Yes. द स्मॉल स्केल स्टार्टअप, क्योंकि सब
actually cover होने ये चाहिए, because that's what people will experience at the very start. और थ्रू इन एक मल्टी मिलियन डॉलर कंपनी को से रिलेट करेंगे इन द इनिशियल स्टेज, दे विल रिलेट टू कंपनी लाइक अस व्हिच इज रियली स्मॉल नाउ. So you don't tell we're really small, but yeah, comparatively we are medium size, small to medium size enterprise. That's what it is. So that was really good, which happened. Yeah. So, guys, this was the first episode of the Coding Adda podcast. And what would you like to say more? So already we have spoken a lot, but still, it was our first podcast as well as a guest, and we thank you, the Coding Anda team, to inviting us, and really great podcast to have really great host and the team, and I really appreciate him. To all the audience, please like this video, share it, and subscribe to their channel. This will motivate them a lot.